I learnt, you learnt, he learnt, she learnt, it learnt, they learnt, and we all learnt. What? Present tense. And from today, I'm going to start past tense. Hello everyone, my name is Charu Goswami and you are watching Learn with Charu. Dance, 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 dance. It's a form of verb which tells us about the time. Dance, 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 dance. The past is then, the present is now, the future is for later. The past is then, the present is now, the future is later. Dance, 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 dance. Now don't get tense because of tense, as it makes really sense. Now don't get tensed because of tense, as it makes really sense. Dance, 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 whoa, whoa. Now, first of all, let us know about the past tense. That what is past tense? Past tense is used to talk about actions that have happened in the past. And past tense has also 4 parts, just as present tense has, right? So number 1 is simple past tense, number 2 is past continuous tense, number 3 is past perfect tense, and number 4 past perfect continuous tense. And today we will discuss about simple past tense and past continuous tense. So let's start. Now the question is that what is simple past tense? An action that is completed before now. Okay? In this tense we talk about an action that is completed before now. Okay, let's look at this example. I played football yesterday. Okay, now look at the timeline. This is the present situation. Okay, and what he is saying that I played football yesterday. So what is yesterday here? Past. So here, okay, here is what? I played football yesterday. So this is the present situation when I am saying that I played football yesterday. Okay. So here yesterday is denoting past. So here action happened when? Before now. Okay. Number 2, we also talk about finished actions. Okay. In this tense, we also talk about finished actions. Now in this sentence, what is the finished action? I played football. Okay, this action is finished when? In the past. Okay, that I played. Now here in the past action is finished. Right?
So in this tense we talk about the action that is completed before now, and we also talk about the finished actions, right? My dear students, I want to tell you one thing, that if you didn't watch tenses part 1, 2 and 3, please watch those videos. Why? Because if you watch those videos, then only you can easily understand past tense, right? So it is very necessary to watch, okay? And their link is given in the description box, okay? You have to just click it and watch it, okay? Now let's understand the sentence pattern of the past tense. Now first of all, positive, okay? If the sentence is positive, so let's learn how to make positive sentence. Subject plus V2. V2 means verbs second form plus object. इसलिए मैंने आपको कहा कि आप टेंसेस के सारे पार्ट देखना, बिकॉज इन टेंसेस पार्ट 1 आई टॉट अबाउट रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. अब आप पूछोगे मैम ये क्या होती है, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी. यू गो एंड वॉच इट देयर. आई हैड ऑलरेडी टॉट. ओके, सो verb 2, verbs second form plus object, right? Subject I, verbs second form. First form is clean and second form is cleaned, okay? So subject I, verb second form cleaned, object the house. So I cleaned the house, we cleaned the house, you cleaned the house, they cleaned the house, he cleaned the house, she cleaned the house, and it cleaned the house. So isn't it very simple that all the verbs are same here? There is no need to change verb according to the subject. Okay, so it is very simple. Now let's come to the negative sentence. Subject plus did not plus verbs first form plus object. तो subject plus did not plus verbs first form. अब ये हमेशा ध्यान रखना, जब यहाँ पर did है तो यहाँ पे verb की first form आएगी. ठीक है, जैसे do does में जब does आता था तो उसके साथ हम verb के साथ s और es नहीं लगाते थे, right? तो same thing is here also. सिंपल पास्ट टेंस में भी जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो डिड के साथ कभी भी वर्ब सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म मत लगा देना. केवल डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई सब्जेक्ट डिड नॉट सेम यहां आ गया, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्लीन, object the house. So here I did not clean the house, you did not clean the house, we did not clean the house, they did not clean the house, he did not clean the house, she did not clean the house, and it did not clean the house. Okay, now let's make interrogative sentence. Did plus subject plus again verbs first form plus object plus question mark. For example, did subject I, did I, verbs first form clean the house. Did I clean the house? Did you clean the house? Did we clean the house? Did they clean the house? Did she clean the house? Did he clean the house? Or did it clean the house? Isn't it very simple? Now,
let's understand simple past tense usage. We use simple past tense with time expressions. Okay? What are the time expressions? Yesterday, last night, last week, 3 months ago, in 2004. So these all are time expressions, and with such time expressions we use simple past tense. Okay? For example, they arrived yesterday. Time expression. She phoned me last Saturday. So last Saturday is also here time expression. Right? Number 2. We also use simple past tense without time expressions. Number 1 is that we can use it with time expressions, and number 2 uses that we can use it without time expressions also. For example, she cooked dinner. Time is not given here. She cooked dinner. Okay? He ate ice cream. Time is not mentioned. Right? Simple. Number 3. We use simple past tense with the recent past. Recent past means something that just happened a short time ago. ठीक है? A short time ago. अभी हाल ही में ही हुआ है वो. ठीक है? लेकिन it should be recent past. Okay? For example, she phoned me yesterday. So yesterday is here denoting recent past. Right? We also use simple past tense when we talk about distant past. Distant past means something that happened a long time ago. Okay, that's why I've written it like this. A long time ago if something happened. For example, she lived in Delhi a long time ago. Okay, a long time. Understand? Now, habits. We also use simple past tense when we talk about our past habits. For example, when I was in Chennai, I went to the beach every day. So here I went to the beach every day is used to talk about the past habits. Right? Next, series of completed actions in the past. Okay, series of actions. For example, I worked out at the gym, I took a shower, and I went to school. So what is this? Series of actions. ठीक है? एक के बाद एक. For example, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया था, है ना? और मैंने आपको डेली रूटीन पे लिखने के लिए भी दिया था, याद है? और उसमें हमने कैसे किया था? I wake up at 5, then I go for walk. किया था ना? और वहां पर सेंटेंस पैटर्न किसके अकॉर्डिंग था? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग. और यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग आएगा? सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग. तो हम कैसे करेंगे? I woke up at 5, then I went for walk. तो सीक्वेंस आया. ठीक है? सो सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट. और यहाँ पे क्या है? एक्शन कंप्लीट हो गया है. कब? पास्ट में. ठीक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो क्या था? मैं खाता हूं, पीता हूं, है ना? ठीक है? मैं जाता हूं, मैं सुबह उठता हूं. और यहाँ पे क्या था? जाता था. ठीक है? जो एक्शन है वो क्या है? कंप्लीट हो चुका है पास्ट में. डू यू अंडरस्टैंड? तो हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे. Now it's a time to understand the past continuous tense. The past continuous tense is used
for an action that was still going on at a particular moment in the past. Okay, the action was still going on, but when? At a particular moment and in the past. ठीक है, वो एक्शन चल रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, और वो भी कब? पास्ट में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉचिंग द न्यूज एट दैट टाइम. Time is given, particular time, at that time. Now look at the timeline here. This is the present situation and here it is past. Okay. Now action is here going on. That time. Suppose this is the particular time here. This cross. Okay. Here this cross is denoting the particular time. That time. And here action is going on. What is the action here? That I was watching the news. This is the action going on at the particular time. Understand? Now let's look at the sentence structure, or we can say the sentence pattern of past continuous tense. Positive. Subject plus was, were, plus verb's first form plus ing plus object. Okay. For example, subject I, was, were में से I के साथ क्या आएगा? Was. Okay. I was plus V1. V1 is here eat plus ing. So eat plus ing, eating, right? So I was eating and object is mango. I was eating mango. He was eating mango. She was eating mango. And it was eating mango. So with I, he, she, it, we use was plus verb's first form plus ing. Okay. Now look at this. We were eating mango. You were eating mango. They were eating mango. So with we, you, they, what we use? Were. Right? Now let's make negative sentence. Subject plus was, were, not. Okay? Plus V1 plus ing. Subject I, was, not here, not. Eat plus ing, eating mango. Right? Mango is object. So I was not eating mango. He was not eating mango. She was not eating mango. And it was not eating mango. And if we use we, you, they, then how do we frame the sentence? We were not eating mango. Okay? We were not eating mango. We were not eating mango. You were not eating mango. They were not eating mango. Right? Now let's make interrogative sentence. Was, were plus subject plus verb's first form plus ing plus object plus question mark. For example, was. Okay, because I is there, so we have to use was. Was I eating mango? Was, subject I, verb first form plus ing, eating, object mango plus question mark. So was I eating mango? Was he eating mango? Was she eating mango? Was it eating mango? Now with we, you, they, how can we frame sentence? Were we eating mango? Were you eating mango?
were they eating mango? Okay, now let's understand the usage of the past continuous tense. The past continuous tense is used to refer a continuing action during a particular period in the past. Okay, continuing action when? Particular period in the past. For example, he was watching TV throughout the afternoon. Throughout the afternoon he was watching TV. वो TV देख रहा था throughout the afternoon. So what is the particular period in the past here? This throughout the afternoon. The afternoon is the particular period when he was watching TV. Okay. Now next is, the train was running late regularly during the last 1 week. So last 1 week is a particular period in the past. Okay. The train was running late regularly late चल रही थी. And during when? During the last 1 week. So this is the particular period here. Okay. Continuing action during a particular moment. Here we discussed about what? Particular period. Here what we are going to discuss now? Particular moment. Okay, moment means kshan, moment, us moment. So how? At 10 p.m. I was sleeping. Okay, so what is the particular moment here? 10 p.m. At 10 p.m. I was sleeping. This is the particular moment, right? So for the particular period also we can use past continuous, and for the particular moment. Okay, to denote particular moment also we use past continuous tense. An interruption in the continuity of an action in past. ठीक है, पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यूस चल रहा है और उसमें जो इंटरप्शन आता है, ठीक है, रुकावट. ओके, फॉर दैट ऑल्सो वी यूज पास्ट कंटिन्यूस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, I was cooking when you arrived. I was cooking. मैं खाना बना रही थी. And what is the interruption here? When you arrived. This is the interruption here, right? The students were talking when the teacher walked in. So, continuation में क्या चल रहा है? Continuity of action in the past क्या है? The students were talking. Okay? And what is the interruption? When the teacher walked in. This is the interruption. Right? Next is two simultaneous actions. Simultaneous means at the same time. Okay? When two actions are going together. But here in the past tense. Right? When two actions were going on together. Okay? How? She was humming a tune as she was cooking dinner. Okay, she was humming a tune. Okay, and she was cooking dinner. Two actions, same time. Okay. I was thinking of work while I was tying my shoes. जब मैं अपने शूज को टाई कर रही थी, अपने शू लेसेस को टाई कर रही थी, उस समय मैं किसके बारे में सोच रही थी? आई वॉज थिंकिंग ऑफ वर्क, कि मुझे कुछ काम करना है. कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं और उसके साथ कुछ सोच भी रहे होते हैं, या कभी किचन में खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते बनाते गुनगुना भी रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं. राइट? सो फॉर वॉट? फॉर द साइमल्टेनियस एक्शंस ऑल्सो, बट इट शुड बी इन द पास्ट. Okay, in the past it was continuing, right? वो चल रहे थे. So these are the examples. Atmosphere. In English, we often use a series of parallel actions to describe the atmosphere at a particular time in the past. ठीक है? कुछ actions ऐसे होते हैं जो parallel चलते हैं. ठीक है?
तो उन एक्शन, वो सीरीज में है और वो पैरेलल चल रहे हैं, तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए द एटमोस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि उस समय कैसा एटमोस्फेयर था उस पर्टिकुलर टाइम पर पास्ट में, उसको बताने के लिए जो पैरेलल एक्शंस हैं उनको बताने के लिए वी ऑल्सो यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट. When I walked into the office, several people were busily typing. ठीक है? Some were talking on the phones. Some were complaining to each other. So all are the parallel actions that are going on here. ठीक है, जब मैं ऑफिस गया था तो वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो टाइपिंग कर रहे थे, कुछ लोग, और कुछ लोग फोन पे बात कर रहे थे, और कुछ एक दूसरे से मतलब कंप्लेन कर रहे थे. सम वर कंप्लेनिंग टू ईच अदर. ठीक है, सो दिस इज व्हाट एटमोस्फेयर. ओके, यहाँ पे हम एटमोस्फेयर की बात कर रहे हैं कि उस समय ऐसा हो रहा था एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. वो मोमेंट क्या है पर्टिकुलर? व्हेन आई वॉक्ड इनटू द ऑफिस एंड दीज एक्शंस वर हैपनिंग दैट टाइम. Right? These actions were going on. The past continuous tense is used with words such as always or constantly, okay, to express the idea that something irritating or shocking often happened in the past. ओके, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमको काफी इरिटेट कर देती हैं. ठीक है, पास्ट में जो हुई हैं. ठीक है, और वो एक्शन क्या है? बार बार हो रहा है. सो फॉर दैट वी यूज ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली. राइट, सो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल. शी वॉज ऑलवेज कमिंग लेट टू द क्लास. और वी कैन से दैट हम कंप्लेन करते हैं कभी किसी को. ठीक है, कभी टीचर कंप्लेन करती है ना क्लास में कि मैम हमेशा लेट आता है. Okay, she was always coming late in the class. So it is what? Complain भी कर रहा है वो, irritate भी हो रहा है, और क्योंकि repeated action है, always, हमेशा. Okay, so she was always coming late to the class. He was constantly talking. Okay, he was constantly. So I have used here always also, constantly also. So this is also the reason which makes us irritate, है ना. ये भी एक रीजन है जिससे हम इरिटेट हो जाते हैं, है ना. दैट ही वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग. केवल बोलती ना मैम कंटिन्यूसली यू आर टॉकिंग, बातें करते जा रहे हो, है ना, और आप इरिटेट भी हो जाते हैं मैम. राइट, सो फॉर दैट ऑल्सो वी कैन यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. वी ऑफन यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस to set the scene in stories. Okay, often the story starts with the past continuous tense and then moves into simple past tense. स्टोरीज में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है और उसमें सीन को सेट करने के लिए वी नीड टू यूज इट. ओके, और कई बार ऐसा भी होता है कि स्टोरी पास्ट कंटिन्यूअस से स्टार्ट हो रही है और सिंपल पास्ट में आके वो रुकती है. फॉर एग्जाम्पल, जॉन वॉज ड्राइविंग थ्रू टाउन. पास्ट कंटिन्यूअस, ही वॉज ड्राइविंग थ्रू टाउन. इट वॉज रेनिंग. सडनली जॉन सॉ द किलर. तो यहाँ पे जो स्टोरी है पहले क्या चल रहा था? पास्ट कंटिन्यूअस. और पास्ट कंटिन्यूअस चलते चलते अब ये कहाँ मूव हो गई? सिंपल पास्ट. राइट, ठीक है. और ये आपको तब समझ में आएगा स्टोरी राइटिंग जब मैं आपको पर्सनली स्टोरी राइटिंग करवाऊंगी. देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस पास्ट टेंस, क्योंकि स्टोरी राइटिंग में वी यूज पास्ट टेंस. ठीक है, स्टोरी हमेशा पास्ट में लिखी जाती है. तो जब आप स्टोरी राइटिंग करेंगे, जब हम आगे फ्यूचर में जब ये टेंस फिनिश हो जाएगा उसके आगे जब हम राइटिंग सेक्शन में आएंगे तब आपको ये और अच्छी तरह समझ में आएगा. और ये भी हो सकता है कि इसके बाद जब मैं पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कराऊं तो मैं आपको स्टोरी दे सकती हूँ. वी कैन डू विद द टेंस ऑल्सो. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड that when should we not use past continuous tense
And in my previous videos also, I taught you that we should not use any continuous tense when stative verbs are there. ठीक है, जब stative verbs होती हैं तो वहां पे हम कोई भी continuous tense यूज नहीं करते हैं. मैंने अपनी सारी वीडियोस में बताया है. और stative verbs होती क्या है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, तो ये देखने के लिए आपको पहले की वीडियोस देखना बहुत जरूरी है बेटा. अगर आप टेंसेस के सारे पार्ट्स नहीं देखोगे तो आपको ऐसे आगे का कोई भी टेंस समझ में नहीं आएगा. इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि प्लीज वॉच माय वीडियोस प्रॉपरली. ठीक है, तो स्टेटिव वर्ब्स मैंने आपको पहले भी बताया, इट्स रिलेटेड टू आवर इमोशंस. ओके, इट्स रिलेटेड टू आवर मेंटल स्टेट, राइट. सो वो होती हैं स्टेटिव वर्ब्स. ठीक है, तो इनके साथ वी शुड नॉट यूज एनी कंटिन्यूअस टेंस. नाउ लेट्स लुक एट हियर. आई वॉज नोइंग हिम फॉर मैनी ईयर्स. और हाँ, मैंने आपको एक वीडियो में स्टेटिव वर्ब्स बताए भी हैं रिटर्न में कि कौन कौन सी होती हैं. ठीक है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं. जैसे यहाँ पे नोइंग है. ठीक है, सो दिस इज I was knowing him for many years. Second, we were wanting to call you. Both the sentences are completely wrong. क्योंकि यहाँ पर knowing और wanting दोनों ही stative verbs हैं. So let's make the correct sentence now. Okay? I was knowing him for many years. No. I knew him for many years. I knew him for many years. This is the correct sentence, right? We were wanting to call you. Now you make the correct sentence. Okay? We were wanting to call you. Make it yourself. Okay? कुछ चीजें खुद को भी करनी चाहिए, right? Now it's a homework time. Have a look. Please do this homework in your English grammar notebook. And even you can write your answers in the comment section. Right? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप comment section में answers देते हो. मुझे लगता है I feel कि आप पढ़ रहे हो एंड यू आर वॉचिंग माई वीडियोज प्रॉपरली. ठीक है, और एक चीज और मैं आपको कहना चाहती हूँ. मैं आपको टेंसेस पढ़ा रही हूँ, आप वीडियोस देख रहे हो, और हो सकता है कि आपको बहुत सारे कंफ्यूजन हो जो अभी आप पूछ नहीं रहे हो, और ये भी हो सकता है कि अभी आपको सब समझ में आ रहा है और आगे जाके आप सब कुछ भूल जाओ. तो इसके लिए क्या करना है, मैं हमेशा बोलती हूँ प्रैक्टिस. टेंसेस ऐसी चीज है, it requires a lot of practice. और ऐसी चीज है, ऐसा नहीं कि अभी करनी है स्टूडेंट लाइफ में, आपके लॉन्ग टाइम के लिए भी, आगे फर्दर स्टडीज के लिए भी आपको हमेशा इसकी प्रैक्टिस करनी है. ग्रामर एक दिन, जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, ग्रामर इज ऑल्सो लाइक दैट. ठीक है, दूसरी बात, जितना आप इंग्लिश बोलोगे, ठीक है, जितना आप इंग्लिश बोलोगे घर में बाहर जहां पे भी आप जाते हो, उतना आपको टेंसेस आएंगे. क्यों? क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलोगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत वैसा इंग्लिश बोलो, बहुत हाई फाई नहीं. आप सिंपल लैंग्वेज यूज कर सकते हो. सिंपल लैंग्वेज में आप इंग्लिश में बात करो अपने घर पे, अपने पेरेंट्स से. यू कैन टॉक, एंड अगर आप बात करोगे तो आपका टेंसेस अपने आप ही, आपके टेंसेस क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि आप जब आप इंग्लिश में बोलोगे तो आप ऑब्वियसली सारे टेंसेस का यूज करोगे, और जब आप सारे टेंसेस का यूज करोगे स्पोकन इंग्लिश में तो ऑटोमेटिकली आपको टेंसेस आ जाएंगे. देखो, घर में कोई भी चीज होती है, जब आप उसको यूज नहीं करते तो वो खराब हो जाती है. ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले मेरा टीवी था, 1-2 साल पहले की बात है, मैंने यूज नहीं किया. 6 मंथ्स तक मैंने उसको यूज नहीं किया, और उसके बाद इट्स अ ट्रुथ, वो खराब हो गया. ठीक है, तो इसलिए
जब तक आप इंग्लिश ग्रामर में जितना आप प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपको बार बार उस चीज को करना है। ऐसी स्पोकन इंग्लिश में भी आपको टेंसेस का यूज करना है। जितना आप इसको यूज करोगे उतना आप उसमें मास्टर हो जाओगे। ठीक है, करके देखना आप ये। सो आई विल कम सून विद द नेक्स्ट टॉपिक, पास्ट परफेक्ट एंड द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।